दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं मदन सिंह और मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आई एम श्योर यू गोइंग लाइक दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत से आदमियों ने मेरे से पूछा भी कैप्टन, अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आर वी गोइंग टू हैव अ वर्ल्ड वॉर और वी गोइंग टू हैव समथिंग एल्स, ए लिमिटेड वॉर, एंड विल ईरान बी डिफीटेड? वेल जेंटलमैन, मैं आपको कुछ आंसर्स देने वाला हूं विद माई मिलिट्री एक्यूमेन। सबसे पहले तो ये है कि Iran was expecting an attack from America as well as Israel, no doubt about it. पर उनको एग्जैक्ट नहीं पता था कब अटैक करेंगे, कैसे करेंगे, एंड दैट इज वेयर द सरप्राइज element came in, because one of the principles of war is surprise, and the Iranians were totally surprised. That is number one. Secondly, the top echelons of their leadership had been already infiltrated by Israel. With the result, they could easily get hold of, the Americans could go and kill all the people which mattered. And they killed 48 persons, including the Ayatollah Khomeini, within the first 1 or 2 hours of the battle. अब जेंटलमैन 4 दिन की लड़ाई हो गई है, बट द वॉर इज़ नॉट कमिंग टू एन एंड. ईरान इज़ ऑल्सो रिटेलिएटिंग. पर एक बात बहुत बड़ा धक्का लगा है ईरानियंस को, अ लॉट ऑफ बिट्रेयल. व्हाट दे फील दैट इज़ रशिया एंड चाइना हैव नॉट इंटरवीन ऑन द साइड ऑफ ईरान. मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन थी ईरान की, दैट दे हैड थॉट दैट रशिया and China will intervene on the side of Iran. Actually, both the countries are very shrewd and they don't want to antagonize America. That is the crux of the issue. तो अब लड़ाई कहाँ चलेगी? ईरानियन ने 8 नेशंस पे अटैक भी किया है, दोज वर द प्रो अमेरिकन्स, बट उन्होंने पाकिस्तान को अभी अटैक नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिकन्स हैड यूज्ड द पाकिस्तान एयर स्पेस to attack Iran. और वन रीज़न कुड बी दैट पाकिस्तान है न्यूक्लियर पावर, तो वो नहीं अटैक करना चाहते. एंड एज इट इज़ पाकिस्तान जो है ट्राइज टू प्ले द डबल गेम, सेइंग दैट दे आर अ फ्रेंड ऑफ ईरान. खैर, द क्वेश्चन इज ये लड़ाई कितनी और चलेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दिस वॉर विल लास्ट अनदर 4 weeks, मेबी 5 weeks. एंड अभी तक क्या पोजीशन हुई है? लेट मी टेल यू. द फर्स्ट पोजीशन इज दैट द ईरानियन लीडरशिप हैज़ बीन obliterated. दैट मीन्स दे हैव बीन वाइप्ड आउट. एंड अब सेकेंड एंड थर्ड रंग लीडर्स आर देयर, एंड दीज लीडर्स कैनॉट लीड द कंट्री फॉरवर्ड. दैट इज़ नंबर वन, बिकॉज देर इज़ नो सेंट्रलाइज कमांड. तो एक ही चीज़ है, आई कैन से विद सर्टनटी दैट ईरान हैज़ बीन डिफीटेड. बट डिफीटेड का मतलब ये नहीं दैट देयर गोइंग टू बी रेजीम चेंज इमीडिएटली, ऐसा नहीं होने वाला है. But the fact remains that Iran at the moment is defeated by the combined coalition of Israel and America. Actually, the force which was applied by the Americans and the Israelis was stupendous. It's too much. And Israel, really, in the very first day of the battle, put in 200 aircraft to bomb the sites of Iran. And that was very decisive, because in that period they killed the supreme leader also. So अब आगे क्या होना है? इसराइल जो है, they had bombed UAE and so many other countries, Abu Dhabi, then they had bombed Bahrain, Qatar, and Saudi Arabia. In fact, they bombed 8 countries and making it into a Sunni-Shia conflict. Now ये बहुत important point है कि ईरान ने जिन नेशंस को अटैक किया, दे वर ऑल फॉलोअर्स ऑफ द सुन्नी फेथ, एंड द शियाज देयर आर इन मिनॉरिटी, एंड द ओनली प्लेस ऑफ कोर्स विद द शियाज इन अ बिग मेजॉरिटी इज इन ईरान. सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो इससे ये पता चलता है दैट दिस इज नॉट ए वॉर विच इस्लाम वाज फाइटिंग as one monolith organization against America and Israel. No, sir. This is a war, a coalition, and a fight between Israel on one side, aided by the Sunni nations, versus a Shia nation, Iran. And of course, Iran has got on its sides the Houthis from Yemen,
Yemen, which are also following the Shia faith, and they have Hezbollah. उनकी एक और सपोर्टर जो है हमास हैज़ बीन वाइप्ड आउट. सो आगे क्या होने वाला है? यू सी इनिशियली द ईरानियन रिएक्शन वाज प्रीटी वाइल्ड बिकॉज बेसिकली इनकी कोहेसिव लीडरशिप नहीं थी. देयर वाज नो लीडर टू लीड देम फॉरवर्ड. So they were doing all sorts of things on their own, like a loose cannon firing here and there. But the net result of all this has been that the effect of the bombing was not there. And initially, Abu Dhabi and Dubai had cancelled all their flights, but from yesterday night, the civilian flights have been restored to some extent. And I was looking at the internet and I found that tickets are available from Bombay to Dubai and Abu Dhabi, and the price is ranging between 8 to 12,000 rupees. It's not much. So if the flights are restored, it means there is some semblance of normalcy which has come in. That means the bombing or the rocket attacks by Iran are not leading anywhere further. And aage they are going to get degraded because Donald Trump has made it very clear that I am going to use the latest weapons to finish off Iran. Now, lot of people ask me, कैप्टन आप ये बता सकते हैं कि क्यों ये अमेरिकन ने अटैक किया? व्हाट वाज द रीज़न टू अटैक? भाई देखिए ऐसा है, एवरी कंट्री इज़ लुकिंग फॉर सर्वाइवल. दैट इज़ अ क्रूशल इशू. एवरीबडी वांट्स सर्वाइवल and the Americans are pretty sure that what's going to happen now is something very drastic because Iran, if it was allowed to prosper, would have had the nuclear weapons and they wouldn't have hesitated to use them against Israel, wiped it out from the world map, and later on, if they could get the delivery system, they would have gone and used them against America. So it's a question of self-preservation and survival, and the Americans decided that time had come to attack Iran. पर मेरी ओपिनियन ये है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया. ब्लंडर इन द सेंस द अटैक हैज़ कम 40 years too late. The time to attack Iran was जब 1980 में all the hostages were in the custody of the Iranians, and then the negotiations had taken place and they were released on the payment of a fat sum of ransom. वो टाइम था ईरान के ऊपर अटैक करने का. फिनिश दिस क्वाइतल खमानी एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स ओवर देयर बिकॉज ईरान में एक रजीम जो आई है पावर में, दैट इज़ ए क्लर्जी रजीम, एंड इनको निकालना और डिसरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है बिकॉज दे आर मेंटेनिंग एन आर्मी ऑल्सो विच कॉल्ड द सिक्योरिटी गार्ड, यू नो, द विच इज़ अ फोर्स created just to defend the clergy. That is the sad part of the whole thing, that there is a force created to defend the clergy. किसी कंट्री में भी नहीं होती ये फोर्स. No other country has such a force. So the Americans have to wipe out this force first of all, and then only they can contemplate a regime change, because till the power is taken out of the hands of the clergy, I do not see how there can be a regime change there. जो son है of Reza Shah Pahlavi, who is in exile in America, is very optimistic, and he says he'll be able to go back, but I don't think he has much of following in Iran at the moment. But definitely the regime in Iran was a diabolical regime, and the Iranian people, at least more than 50% at the moment mostly, would be very happy to see the Iranian regime go. But जैसे मैंने आपको बताया है कि even after 4 weeks of fighting and bombing, जब तक the ability of the Americans to degrade the IRC, that is the Iranian guard, you know, which guards the clergy, that is degraded and destroyed, there can be no regime change. So regime change इतना आसान नहीं होने वाला है. And एक और reason it is more difficult is because the Americans and the Israelis do not want to put boots on the ground. So ये सिर्फ एक एयर बैटल के ज़रिए ये करना चाहते हैं. They are hoping that the local Iranian population will be able to get up. तो अभी तक तो मेरी रीडिंग फाइट की है कि ईरान की फाइटिंग एबिलिटी बहुत डिग्रेड हो गई है. There is certain element of demoralization in the Iranian ranks, no doubt about it, because जब आपके 48 to 50 leaders have been wiped out,
They need leader to come forward, and there is nobody to come forward. The president is there; he has been left out, but he is not a man of any decisiveness, and neither is he known to the Iranian people. So it's very difficult for him to lead anybody forward. The only way is that if the Iranian clergy abdicates, and that can only be done if the Iranian army, the armed forces are destroyed, number one. And number two, you see, the members of the Majlis, there are about 88 members of this group, the clergy, they are destroyed. Whether that will happen or no, we'll wait and see.